Hello. Hello everyone, welcome back to Kalam IAS Academy, and we are looking at this paper discussion of UPSC 2023 mains. Last class we had discussed the polity section of GS paper 2, and today we will be discussing the Indian society part of GS paper 1 as well as the governance and social justice part of GS paper 2. Okay, so let's start. There will be 10 questions which we will be discussing in today's class. We will be starting with the Indian society part, and the Indian society part, this time the questions were very generic in nature, but the thing is you have to brainstorm to find the answers. Like it was a generic looking question, but you will have to write specific points, only then you will be getting good marks, right? So you have to take care of this. So first question, it was question number 8 in GS paper 1, that do you think marriage as a sacrament is losing its value in modern India? You have to answer it in 150 words, and it is a 10 mark question, right? So if you see the question, so obviously the Indian marriage is losing some of the sacraments, but completely it has not lost, right? So from the statement itself you will find that there are two parts in which the question need to be tackled, right? The first part you will be writing that the marriage as a sacrament is losing its value in the modern India. Then the second part you will be writing, means first part you will be writing yes, second part you will be writing no, that is the marriage as a sacrament is not losing its value in modern India. And then as it is asking do you think, so in the conclusion you should be giving your view that whether it is losing or whether it is not losing, right? So this should be the structure. In every answer you will have to write introduction, main body, conclusion, right? And you should allocate a space as well as the time for this. Please do not escape it. This macro structuring is very important for every answer. Okay, so we will now go to the question. What introduction you can write in this? Okay, so you can define marriage in your own words. Here I have taken the standard definition of the marriage, but you can define on your own that the marriage is a legally and the socially sanctioned union, usually between a man and a woman, that is regulated by laws, rules, customs, belief and attitudes that prescribe the rights and duties of the partners and accord status to their offspring, if any. So this is the marriage definition. You can make your own marriage own definition and you can write it. Plus you have to connect the statement with this, that the marriage has been considered sacred in India since ancient times, but in modern times its nature and character are changing. How this is changing and what should be done, that we will be discussing in the main body, right? Online students, if you are there, please comment. So the first part you have to see that the marriage is losing its sacrament value, because आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि सिनेरियो चेंज होती जा रही है. मॉडर्न टाइम्स में अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इन सब के कारण जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं इन द इंडियन सोसाइटी, राइट? So what is the change in the modern times? There are alternatives to the marriage also, like the new concept is there, live-in relationship, and live-in relationship is being accepted by the couple as well as some modern thinking parents are also accepting living relationships, right? Even the Supreme Court has given the decision in favor of living relationship. For example, in the S. Khushbu versus Kanyamal case 2010, it was decided that
the living relationship are not illegal or immoral. Means society cannot say that the living relationship is immoral in nature, and the adults have the right to live together even if they are not married, right? So if the adult has consent, they can live in a relationship, and therefore अब marriage से क्या होता था, पहले पुराने जमाने में साथ रहना है तो उसके लिए शादी करना जरूरी है, बट राइट नाउ अभी क्या हो रहा है कि मैरिज होने से क्या हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप से एक अल्टरनेटिव बन जा रहा है, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज वैलिडेटेड दिस लिव इन रिलेशनशिप. नॉट ओनली दिस, द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड in the Lalita Topo versus the state of Jharkhand that a couple in a live-in relationship can be deemed to be married, if they have lived together for a long time and have been accepted by the society as a married couple. So if any couple who has been living in the living relationship for long period of time and society has accepted that relationship, then obviously it will be considered as a that living relationship will be considered similar to the marriage, right? Then another judgment, that is Payal Sharma versus N. Talwar 2018. In this it was decided by the Delhi High Court that a woman in a living relationship is entitled to the same right as legally wedded wife under the Hindu Marriage Act 1995, and that a children born out of a relationship is entitled to maintenance under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. So even if there is no marriage, but the couple has been living in a living relationship, so that will be considered as a legally wedded wife. The wife will be considered, the female partner will be considered as the legally wedded wife, and according to Hindu Marriage Act. And if a children is born out of the living relationship, so there will be maintenance provided under the Hindu Maintenance Act 1956. So those of you who are living in a living relationship, you should be updated about this provision, right? Then we have changing form of the marriage. Slowly our society is accepting several Western things, or slowly our society is getting broad minded, right? Therefore the terms like the same sex marriage, it is getting more acceptance than sologamy or autogamy. Means there are some person who tells that I am married to myself, I love myself, right? So there is no need to have any partner. Okay. So in that case there will be, the marriage has changed its form. Then there is decline in the religious customs and rituals. एक मैरिज के होने के लिए, शादी होने के लिए जितना ज्यादा रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पहले फॉलो किया जाता था, बहुत तक होता था कि शादी हो गई उसके एक साल तक कुछ ना कुछ रीति रिवाज विधि व्यवहार चलती रही, राइट? बट राइट नाउ पीपल डू नॉट हैव सो मच टाइम, तो ये सब चीजें जो है वो चेंज होती जा रही है. तो रिलीजन एंड दिस रिलीजियस things and the custom and tradition things is changing, right? So that is there. Then there is faster increase in the divorce rate also. Earlier times क्या होता था कि एक बार हमारे इंडियन सोसाइटी में कि शादी हो गया जिससे भी हुआ, बस लाइफ टाइम के लिए उसी के साथ रहना है, बट वेस्टर्न कंसेप्ट में डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई है. तो ये चीजें वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने के चक्कर में ये चीजें भी यहाँ इंडियन सोसाइटी में भी अडॉप्ट किया जा रहा है, राइट? सो दैट इज देयर. देन द स्पाउस सिलेक्शन. द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज सेड इन द शक्तिवाणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 that every couple who is having the legal age, they has the right to choose one's life partner, right? So that is there. Spouse selection is there in the, and जब स्पाउस सिलेक्शन होता है ना, देखो ये स्पाउस सिलेक्शन पहले बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस होता था, दो फैमिली मिलती थी, अरेंज मैरिज होता था, राइट? तो वो सब काफी लंबा प्रोसेस चलता था. तो मैरिज एज ए सैक्रोसैंक्ट दैट वाज कंटिन्यूइंग. बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि दो लड़का लड़की मिले, एक लड़का लड़की मिले तो वो
खुद ही डिसाइड कर लिया कि whether they want to getting married or not, right? तो वो प्रोसेस खत्म हो गया. That's why you can say that somewhat this sacrament thing is losing. Then there is increasing age of marriage. People are getting career oriented. Even girls are getting career oriented, and which they should, right? Women empowerment should be there. So therefore, everyone want to delay this marriage process. Everyone want to be getting married at the later age, right? So therefore, there is increase in the marriage age. Even in the prohibition of the child marriage amendment bill to 2021, it has been talked that now the legal age of the women will be increased from 18 to 21 years age, and it will be at par with the male counterpart, right? So because of this also marriage is losing its sacrament. So these were the points which you can write that how marriage in India is losing its sacrament in the modern times. But all of us know that in the Indian society, marriage is still considered as sacred and it is still celebrated a lot. ठीक है, कोई भी इंसान अपने लाइफ टाइम में जो सबसे ज्यादा वेट करता है दैट इज द मैरिज सेरेमनी का वेट होता है ना. So marriage, you also will have to write this part, that the marriage as a sacrament is not losing its value in the modern times. And how it is not losing? Because still we are having arranged marriages. 93% couple is still married through the arranged marriages, right? Even जो matrimony websites हैं, शादी.com, जीवनसाथी.com, वहां से भी अरेंज मैरिज ही हो रहा, right? So because of this, you can say that marriage still has not lost its sacrament. Then the religious custom and tradition, अभी भी किसी लड़के को भाग के शादी भी करना रहता है ना, तो जाता है वो मंदिर पे, जाता है वो मस्जिद पे कि शादी करवा दो, right? So still tradition and culture is followed. Obviously जितना पहले फॉलो किया जाता था उतना नहीं फॉलो किया जा रहा है, बट स्टिल लोग अग्नि को साक्षी मान के या जिस भी तरह से जो शादी करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ जीसस और इन फ्रंट ऑफ द इन द मॉस्क, सो वेयरएवर दे वांट टू मैरी, सो दैट इज देयर. बट मैरिज एज ए सैक्रामेंट हैज नॉट लॉस्ट कंप्लीटली, राइट? सो दैट इज देयर. Then the cultural significance and social acceptance is there. If any couple is getting married even today, then they are accepted. And like तो मैरिज का जो प्रोसेस होता है वो सब सारी कंप्लीट होनी चाहिए, तो द सोसाइटी में सारा एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है? अब वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ठीक है? तो यू कैनॉट से दैट मैरिज एज ए सैक्रामेंट हैज लॉस्ट कंप्लीटली इन द मॉडर्न टाइम्स. देन जनरेशनल कंटिन्यूटी इज देयर. अभी के डेट पे भी क्या सेम कास्ट का लोग नहीं खोजते? इवन जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं वहां पे भी जाके लोग अपने कास्ट के लोग, अपने से डिफरेंट गोत्र के लोग, राइट, इंडोगेमी में बिलीव करते हैं, राइट? सो सेम थिंग इज हैपनिंग इवन टुडे, और ये जब तक होता रहेगा तब तक मैरिज एज ए सैक्रामेंट विल नॉट बी लूजिंग, ठीक है? तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स भी, आर्गुमेंट्स भी दे सकते थे दैट द मैरिज एज ए सैक्रामेंट इज नॉट लूजिंग completely in the modern times, because still there is significance of marriage, and the couples who are living in the living relationship in the society, there is some acceptance has been there, but उतना ज्यादा भी नहीं जितना marriage को acceptance है, right? So that is there. Then you can conclude that the nature and form of relationship has been changing in India, and for this westernization and modernization is also responsible. But it cannot be said that marriage as a sacrament has been lost in modern India, right? Modern India is still carrying the tradition and culture forward through marriage. So you can give your idea, you can give your view in the conclusion that ठीक है, थोड़ा सा sacrament वाला चीज लूज हो रहा है in the modern times, but it is not losing altogether, right? तो इस तरह से आप कंक्लूजन कर सकते थे.
So this was question number 8. Then come to the question number 9 of GS paper 1. Please read it. Question number 9 says, explain why suicide among young women is increasing in Indian society. Answer in 150 words and 10 markers. So what do you think? How many parts will be there? Look, the question is very specific in nature. It is talking about suicide, but it is talking about the suicide of the young women, right? So this is very specific question and you will have to write a specific answer only. ठीक है, और इसमें दो पार्ट्स बनेंगे. एक पार्ट होगा कि why suicide among the young women, and second part will be what is the solution for that. This is a grave problem. So what is the solution for this suicide among the young women, right? So that is there. Once again you will have to write introduction, body and conclusion in all the answers, right? In the introduction you can write by using some facts, some data, because NCRB National Crime Record Bureau is providing some data regarding the suicides. So you can directly take up some data. और क्योंकि सुसाइड इस वाले क्वेश्चन में सुसाइड डिफाइन करके कोई मतलब नहीं है ना, तो आपको कोई डाटा अगर पता हो तो उससे बेटर इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता. सो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी टोटल 1.64 लाख पर्सन डाइड इन सुसाइड इन 2021, out of which 45 near about 45,000 were females. ठीक है, तो फीमेल के अंदर भी बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं. 1.64 लाख में से 45,000 फीमेल्स की हैं, राइट. और अगर 45,000 को आप इस तरह से देखोगे तो ये आएगा 450 सुसाइड्स पर डे. एंड इफ यू सी दैट among the 450 suicide per day into 2021, then you can say that mostly they are laborers, housewives or self-employed, right? So housewives are also there, and among the housewives there can be this young woman. In the laborers also there can be young women. In the self-employed also there can be young women, right? So with this data you can introduce. Then you should write one connecting sentences to make your introduction specific to that question. Like जैसे there are several reasons for the suicide of young women in Indian society which must be solved on the priority basis. So you can introduce this question like this, right? The first part will be the reason for increasing suicide among the young women in Indian society. Now when you are writing reason for the suicide, you will have to comprehensively look every factor, whether it is social factor, whether it is political factor, whether it is education related, whether it is health related, whether it is psychological related, right? So every factor you have to include, because every factor is responsible for the suicide among the young women also, है ना. तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी. जैसे social problems, if you are taking the examples of the social problem, then family problem, even if the girl is married or unmarried, there may be some family problems, and because of that the woman suicides. And according to the data, 1/3 of all the suicides among the young women is from the family problem only, right? Then there may be issues like the marriage related. For example, marital rape situations can be there, which a woman cannot bear on the day-to-day basis, everyday basis, right? Then there can be dowry harassment, right? Continuously the in-laws are asking for the dowry even after marriage, so there can be mental torture because of this, and the young lady is forced to go to the suicide, right? ये हो सकता है.
या सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, अर्ली मैरिजेस, अब 18 साल लीगल एज है तो 18 साल होते ही शादी करवा दो, राइट। बहुत केस में तो 18 साल होता भी नहीं है लेकिन शादी करवा दिया जाता है, शादी होते ही अब बच्चा चाहिए पेरेंट्स को, राइट। सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, social problems because of which a young woman has to go to the suicide. Then there may be financial problems, like if the lady has taken some loans, or if there is some financial problem and the lady is not able to take that pressure, then the easy way out is to suicide for them, right. So because of that also. Then education and career related, there are several kinds of restriction which is put on the young women. Do not go outside, do not go there, do not be outside after 6 p.m, right. You cannot work at night. So there are lots and lots of pressure, ठीक है। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल जाना है तो इस तरह से ड्रेसिंग करनी होगी, कितना ज्यादा टेंशन है, ठीक है। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड भी हो सकता है द कॉज ऑफ सुसाइड। देन देयर मे बी हेल्थ प्रॉब्लम, लाइक द इलनेस एंड द मेंटल हेल्थ इज देयर, infertility is there, right. So all these problems are there because of which a lady has to go to the suicide, ठीक है। क्योंकि मदरहुड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेडी के लिए, राइट। एंड व्हेन द lady is infertile, right, it is known that the doctor says that she cannot give birth to a child, so फिर they get shattered, right. So it may be the cause of suicide. Then there may be exploitation. Exploitations can be of multiple times, like the sex trade is there, sexual exploitation is there, domestic violence is there, right. Then sexual favor, asking for the sexual favor at the corporate offices. So all these things it becomes a factor for the suicide also. Then bullying, we are living in an internet age, right. So in this 21st century, when internet is a boon, so internet is also a bad, right. So there can be cyber bullying, there can be some pornographic activity, a revenge pornographic activity can be there, right. So because of this, a lady had to go through extreme tension and pressure, and when the person is very depressed in nature, they only want to suicide, ठीक है। Then there may be relationship problems, ठीक है, in the current age where there is increasing live-in relationships, so they are like the forced premarital sex, ठीक है, unwanted pregnancy before the marriage, breakups. So many of times the young woman is not able to tolerate all this, is not able to handle this properly, ठीक है। So this becomes the source of suicide for the young lady, right. So that is there. These are the reasons for increasing suicide among the young women in Indian society. But what are the solutions for this? What will you do? How will you solve all these problems so that the young women do not have to go to the suicide, ठीक है। So what can be the solution? There should be legal reform. Legal reform in the sense that the Dowry Prohibition Act is there, Domestic Violence Act is there, Prevention of Sexual Offence at the Workplace is there, but these are not implemented properly. So legal reform should be there, there should be a stricter implementation of these acts, right. Plus if there is some lacunas in the act, that should also be taken away, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। Then enhance the access to the mental health services, because कोई भी पर्सन जो सुसाइड करता है वो उस टाइम पे जो मेंटल स्टेटस उसकी होती है उस कारण से ही होता है, और अगर वो जो मेंटल स्टेटस है उस टाइम पे कोई संभालने वाला हो गया तो पर्सन विल नॉट सुसाइड, राइट। सो if you enhance the mental status, if you enhance the mental health services, toll free number should be there, reachable doctor should be there,
right? Government facilities should be there, some private institution, NGOs should also be working in this. So if you are there when the person needs it most, तो फिर वहां पे सुसाइड नहीं करते लोग, right? That is there. Then the gender sensitization should be there. Everyone in the society should be aware that a young lady has to go through lots of problem, lots of tension. ठीक है, तो उसको उसी तरह से थोड़ा सा ट्रीट किया जाए, उनको सपोर्ट करे लोग, ठीक है, फैमिली मेंबर्स में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स सब मिलके उनको सपोर्ट करें, ठीक है. तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए इन द सोसाइटी. देन पेरेंटल एंड द फैमिली सपोर्ट्स should will also be there from both the sides. If the girl is married, then both the parents, in-laws as well as their own parents, that should be there, right? Technological solutions should be there, ठीक है, toll free numbers should be provided. Then on some internet free calls should be provided. There should be some chatbots with whom the person is feeling very depressed, at that point of time they can talk to someone, they can share their problems, right? So such technological problem solutions should also be enhanced, because we are living in the artificial intelligence field, ठीक है, virtual reality field की बात होती है, artificial intelligence is there. So using all these tools we can make something in which it will take out the person from the depression, right? जैसे हुआ भी है, ये जो एप्स हैं, किरण हेल्पलाइन, मानस ऐप, ऑल दिस आर हेल्पिंग पीपल फॉर द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, as well as when they are feeling very much depressed, then someone is there to talk, right? So such things are there. Then there should be behavioral change, because क्या हो जाता है ना कि यंग वुमेन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं लोगों का, कोई उनका सपोर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है. सो देयर शुड बी बिहेवियरल चेंज. पेट्रियार्कल माइंडसेट को खत्म करना होगा, because many of the times patriarchal mindset is responsible for the suicide of the young woman, right? So all these are the solutions which should be applied to end the suicide of the young woman. Then how can you conclude it? So the question, by linking this with the suicide, you can conclude that a young woman in Indian society has lots of responsibility. Therefore, the woman should get enough support from the family and friends. The government should implement the National Suicide Prevention Strategy of India, so that no young woman has to go through such mental condition which force them to suicide. देखो, कोई अपने मन मर्जी से खुशी से नहीं करता सुसाइड, ठीक है, वो मेंटल स्टेट ऐसा होता है, वो डिप्रेसिंग स्टेट ऐसा होता है जिसमें लोग फोर्स होके वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, तब वो करता है. तो उस सिचुएशन में अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो सुसाइड कैन बी अवॉइडेड, राइट? देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज रीड इट. Question number 10 says the child cuddling is now being replaced by mobile phones. आपने देखा होगा कि जितने मदर हैं या फादर हैं वो खुद भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, बच्चों को भी एक मोबाइल पकड़ा दिया कि ये देख ली इसमें कार्टून, right? Instead of carrying the child, instead of cuddling the child, such things is happening, right? So discuss its impact on the socialization of the children. 10 marks. So what do you think, how many parts will be there? So there will be 2 parts. One part will be negative impact, and second part will be, as technology is not bad, ठीक है, technology is not bad for everyone, for everything. So there can be some positive aspects also, that also you have to deal in the question. Obviously negative aspects will be more, that we can conclude with. So there will be some positive aspect also. तो ये दोनों negative as well as the positive impact of the
on the socialization of the children when child cuddling is being replaced by the mobile phones, that you have to write. 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो वे फॉरवर्ड का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है. You can write a solution oriented conclusion itself, that will be sufficient. ठीक है. So please do not forget to write introduction, body and conclusion. This is very important. In this macro structuring as well as the micro structuring of the answer is required in every answer, right? So how can you introduce? Directly hit the question. Why is happening such things? Why child cuddling is losing? Why mobile phones uses arises even for the children, right? So the busy lifestyle, digital distraction, increasing dependence on technology and lack of responsibility taking attitudes of the parents and caregiver is the reason for child cuddling being replaced by mobile phones. This has both the positive as well as the negative aspects on socialization of the children. तो ये कारण है कि child cuddling replace हो रहा है by the mobile phones. But there will be some positive aspects as well as the negative aspects, so that you have to answer in the main body part, right? Then what should be the positive negative impact on the socialization of the children? What is happening? ठीक है. So the problem of emotional regulation is there. जब कोई बच्चा रोता है और उसकी माँ उसको गला लगाती है उठा के, the mother loves the child, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप होता है, राइट? वो इमोशनल रेगुलेशन समझता है कि अब रोना रो रहा है वो बच्चा और उसको प्यार मिला तो अब उसको चुप हो जाना चाहिए. ये इमोशन डेवलपमेंट होती है, ठीक है. लेकिन रोना रो रहा है, अब उसको पकड़ा दिया आपने मोबाइल फोन में हो सकता है कि जो आप कार्टून उसको दिखा रहे उसको नहीं पसंद है, सो द बच्चा विल कीप ऑन क्राइंग, राइट? ऑब्वियसली, एंड देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल रेगुलेशन. वो बच्चा लेट से ग्रो करेगा, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, राइट? सो सच थिंग्स विल बी देयर. Then it is seen that nowadays the children learn how to speak, how to walk, all these things they learn at the very later age. पहले होता था कि 2 साल 2.5 साल में सीख जाते थे, मिस छोटा छोटा बोलना, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, ये सब चीजें सीख जाते थे बिकॉज सोशलाइजेशन हो रहा था. बट अब मोबाइल फोन पकड़ाने से क्या हो रहा है कि देयर इज डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. आपने देखा होगा कि दादी अम्मी इन सबको पुराने टाइम पे वो बच्चा के साथ बोलती थी आ ई, राइट? तो उससे सोशलाइजेशन होता है, बट अब वो नहीं हो रहा, ठीक है? तो डिले हो जा रहा है इनका डेवलपमेंट. देन लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ये लैंग्वेज डेवलप करना, ये सोशलाइजेशन होना, ये इमोशन कंट्रोल करना, ये सब चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि 0 to 6 years चाइल्ड का माइंड का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है. और अगर उस एज में अगर आप उसको कर्डलिंग कर रहे हो, उसको प्यार दे रहे हो, तो वो बहुत फास्ट ग्रो करता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द चिल्ड्रन आर हैप्पी, राइट? तो ये चीजें होती हैं, बट ये चीजें लूज करते जा रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी लूज करते जा रहे हो आप, ठीक है? अपना कैरियर देखने के चक्कर में वो पेरेंट्स वो बच्चे को भूल जाते हैं, ठीक है? इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द डिवाइस. अब एक बार खाना खाने से पहले अगर बच्चा रोने लगा और उसको आपने मोबाइल पकड़ा दिया, तो हर एक बार वो खाना खाने से पहले मोबाइल खोजेगा, राइट? सो देयर विल बी इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द डिवाइसेस ऑफ द मोबाइल फोन्स, राइट? सो दैट विल बी देयर. देन obviously the children will be less attached to the parents, ठीक है? वो इमोशंस ही, वो कनेक्शन ही नहीं डेवलप होगा, वो फीलिंग ही नहीं डेवलप हो पाएगा जो मदरहुड वाली होती है, जो फादरहुड वाली जो फीलिंग होती है, वो चीज कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो सोशलाइज ही नहीं कर पाएगा ठीक से, राइट? देन लेस अटेंशन स्पैन्स. ऑब्वियसली एज एन एडल्ट वी कैनॉट कंसंट्रेट अ लॉट ऑन एनी स्मार्टफोन्स और एनी टैबलेट्स. So how can you expect a child, ठीक है? और चाइल्ड का यहाँ पे मतलब ये सिर्फ 0 to 6 years नहीं, 0 to 18 years ऑफ द एज है, ठीक है? तो
द अटेंशन स्पैन्स रिड्यूसेस, और वहां से भी सोशलाइजेशन की जो है प्रॉब्लम आती है। देन ससेप्टेबल टू द साइबर बुलिंग, कुछ साल पहले जो है ब्लू व्हेल्स ऐसी वीडियो गेम्स आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो गेम्स ऐसी बनाई गई कि चाइल्ड के मेंटल स्टेट को इस तरह से कर दिया जाता है दैट चाइल्ड आर फोर्स्ड टू द सुसाइड, राइट। तो ये सारे जो है साइबर बुलिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, उसको मोबाइल पकड़ा के छोड़ दिए हैं, राइट। सो साइबर बुलिंग इज ऑल्सो देयर। एंड इंक्रीज्ड आइसोलेशन, द चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ फील आइसोलेटेड। देखो सोशल मीडिया पे आपके इतने सारे फ्रेंड्स, फेसबुक पे सब जगह पे फ्रेंड्स होंगे, स्नैपचैट पे जहां भी होगा इतने से बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बट रियल में जब आपको जरूरत पड़ेगा तो यू विल हैव लाइक ओनली फ्यू ऑन whom you can count on your fingers, राइट। सो ये चीजें हैं, इंक्रीज्ड आइसोलेशन होता है, वो चिल्ड्रन के साथ भी होता है, ठीक है। वो कहने के लिए है, उनके पास इतने सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, राइट। तो चाइल्ड कडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। Then you can also see some of the positive impact on the socialization of the children, because technology जो है हमेशा खराब ही नहीं होता है, right? तो how technology is helping in socializing, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहा है, ठीक है। आजकल देखोगे कि वीडियो कॉल्स पे बच्चा काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, वाई? बिकॉज द पर्सन, द चाइल्ड इज गेटिंग यूज टू दैट, उसको डर नहीं है, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा कि सोसाइटी में लोग बोलते रहते हैं कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जितना मुझे नहीं आता है, मुझसे ज्यादा तो ये जानता है मोबाइल के बारे में, है ना। यू हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट। सो द पर्सन, द चाइल्ड इज गेटिंग टेक्नोलॉजिकल सेवी, and when they becoming technological savvy, technological friendly, so they can connect with other person also, so there can be some kind of socialization that may happen. Then access to educational resources can also be there, ठीक है। जैसे चाइल्ड की जो चाइल्ड कडलिंग की बात होती है, और कडलिंग जो है वो खराब चीजें नहीं है। आप 16 इयर्स बच्चे को भी अगर कडल कर रहे हो, पेरेंट्स कडल कर रहे हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट। तो लाइक जब क्लास स्कूल जाने लगते हैं बच्चे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, आजकल इतने सारे ऐप्स हैं, राइट। तो उनका बेटर एजुकेशन मिल सकता है इफ द पर्सन इज टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली, राइट। तो वो बेटर सोशलाइज हो सकता है, वो टीचर जो समझा रहा है वो ऑनलाइन मीडियम पे, वो उसको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो दैट इज देयर। सोशल कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट इज ऑल्सो देयर। फॉर एग्जाम्पल एट 15 years child, they may connect with their friends to the different networks, social media networks, so that is there, that will also create some kind of a socialization, right. And early identification of the talents can also be there। देखो बहुत सारे लोग जो है ना, वो कहा जाता है ना कि everyone is born genius, बट उनको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं होता कि व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर एट द अर्ली एज, ही द पर्सन अंडरस्टूड दैट ही इज वेरी गुड एट क्रिकेट, राइट। चाहे किसी भी फील्ड, चाहे वो कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो, तो उनको काफी जल्दी पता चल जाता है कि दे आर वेरी गुड एट दैट थिंग, एंड देन दे कीप ऑन कैरिंग दोज थिंग्स, उसमें उनको एक्सपर्टाइज मिलती जाता है। तो अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके, मोबाइल फोन्स का यूज करके जल्दी एट द अर्ली एज ये पता चल जाए कि इसको किस में इंटरेस्ट है, हो सकता है कि किसी चाइल्ड को स्पोर्ट्स देखने में, बैडमिंटन देखने में बहुत मजा आता है, राइट। तो हो सकता है कि वो रियल लाइफ में भी बैडमिंटन अच्छा खेले, राइट। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द टैलेंट कैन बी देयर, and that will help in better socialization of the child. So सारे negatives ही नहीं है, there are some positives also that you have to write. Then how will you conclude? Obviously positive वाला part बहुत कम है, हर एक child को ये हक है कि वो उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस उनको कडल करे,
that is very much required for the socialization. So you will conclude in that lines only, right? Means though there are few advantages of the mobile phones in socialization of a child, but these are very less than the disadvantages. Therefore, for the healthy development of the mind and body of the child, child cuddling is most important part. The parents and guardians should understand the balance and should take out time for their children. So you can conclude by giving some of the solution. You can conclude by giving some optimistic thoughts, right? So this was this 10 marker question. Now we will see the 15 marker question of the Indian society, which was the question number 19. Please read it once. The question says, why is caste identity in India both fluid and static? ठीक है, answer in 250 words, 15 marks, right? ऐसा क्यों हो रहा है कि why caste identity in India is both fluid and static? क्योंकि caste identity जो है वो सदियों से चलता हुआ आ रहा है. This shows that there is static nature, but in today's world, in the modernized world, in the urbanized world, this caste system is getting diluted also. So there is fluid as well as the static nature. So how many parts will be there? Obviously 2 parts will be there. The first part will be caste identity is static, and second part will be caste identity is fluid. These are the 2 parts which is required in this answer. ठीक है. How can you introduce it? You can introduce it by writing like the caste is one of the hereditary social classes in Hinduism that restrict the occupation of their members and their association with the members of the other caste. The system is rigid and it decided by the birth itself. क्यों rigid है ये? Because this has been decided since by its birth. ठीक है. Starting of the caste system जो हुआ था वो हुआ था profession के according, but उसको बाद उसको fix कर दिया गया कि जो जिस कास्ट में है उसका बेटा उसकी बेटी सब उसी कास्ट में lineage वही कास्ट फॉलो करेंगे, right? So this become very rigid. However, due to modern day changes in the caste system, the caste system is getting diluted. और इसको अच्छे से elaborate करेंगे. We will be doing that in the main body, right? So the first part is reason for the static caste identity in India. Why the caste system in India is static in nature? Why it has been continuing since the 3000 years and it is not diluting that much, it is not being eradicated, it is not being eliminated? What is the reason for that? ठीक है. So reason for the static caste identity are endogamy. सबसे बड़ा रीजन. अभी हमने बात किया था मैरिज का. मैरिज जो होता है इवन इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो शादी होता है वो बहुत ज्यादा शादी होते हैं वो होता है कि इंडोगेमी मींस अपने कास्ट के अंदर अपने जात के अंदर, राइट? तो अगर ये अपने कास्ट के अंदर ही शादी होता रहेगा तो वो इंटरमिंगलिंग ही नहीं हुआ, राइट? सो इंडोगेमी इज दैट. देन रिजर्वेशन सिस्टम, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन है इंडिया के अंदर इन द जॉब्स एज वेल एज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. So those person who is getting the benefit of reservation, they do not want to lose that benefit, and therefore caste system is getting strengthened further. ठीक है, it is not diluting that much, right? So that is there. Then the social discrimination. देखो बहुत सारे social discrimination जैसे untouchability वगैरह अब काफी कम हो गया है, but still in today's world, in the today's India,
रूरल एरिया में आप जाओगे तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ऊंची जात नीची जात वाली चीजें बहुत ज्यादा है अभी भी इंडिया के अंदर, राइट। सो दैट सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल प्रिवलेंट इन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। देन वी हैव पॉलिटिशियंस हु इज डूइंग caste based politics. It is said that the people do not cast their vote, they vote their caste, right? So this is the situation. और इस कारण से अपने कास्ट को, ये जब इतना रिजिड होगा, कोई पॉलिटिशियन खड़ा होके बोलेगा कि मैं इस कास्ट का हूं और इस कास्ट के सारे लोग मुझे ही वोट दें, राइट, तो वो प्रमोट करता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। And because of this caste-based politics, the caste identity is getting rigid in India, right? Then hierarchy. Still in the rural area, that hierarchy is being followed. Brahman, Kshatriyas, Vaisyas, Sudras, Varna system wala hierarchy. Within one Brahmanas, there are hierarchy also. For example, Iyengar Brahman in the Tamil Nadu, they feel that they are superior than other Brahmans, right? So that hierarchy is continuing even today, and therefore this caste system is still rigid in nature, right? Then traditional occupation, आपने देखा होगा कि those who are working as a carpenter, their children also take up that carpenter job. Those person who is working as a blacksmith, their children are also taking the working of the blacksmith, right? So this tradition and occupation continues further, ठीक है। ऐसे ये चेंज हो रहा है, बट अभी भी टाइम आप देखोगे कि जो सदियों से जिसकी फैमिली जो ट्रेडिशन फॉलो करता आ रहा है वही ट्रेडिशन चलता हुआ है, कुम्हार का बेटा कुम्हार बन रहा, राइट? सो दैट इज बीइंग फॉलोड। Then religious practices, there are several kinds of religious practices which is being followed by different caste, and that religious practices is being continued, ठीक है। तो ये चीजें कंटिन्यू हो रही हैं। Then community solidarity, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। What does this mean? That the people from one community, they feel safe among their community, ठीक है। आपने देखा होगा कि बस्ती बसता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, देन किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कम्युनिटी सॉलिडरिटी। उस एरिया में वो आदमी सेफ फील कर रहा है, राइट, एंड दैट पर दूसरे पर्टिकुलर एरिया में जो दूसरे कम्युनिटी का है उसमें वो सेफ फील कर रहा है, ठीक है। So because of this community solidarity, caste system is still rigid in nature, right? So all these points you can write for the points that the reason for the static caste identity in India, right? The other thing, the other part, that is the caste system is, or the caste identity is flexible in nature. How it is flexible? What can be the problem? How this has been flexible in nature? कैसे ये dilute होता जा रहा है, जो rigid nature का था वो dilute होता जा रहा है, ठीक है। तो intercaste marriages are happening, though it is not much, only 5% of all the marriages, only 5% are having intercaste marriages, but हो तो रहा है। पहले के टाइम पे तो सोच भी नहीं सकते थे intercaste marriages के लिए, राइट? तो वो इंटरकास्ट मैरिजेज हो रहा है। संस्कृताइजेशन हैपेंस व्हेन द लोअर कास्ट पीपल फॉलो द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द अपर कास्ट पीपल। तो जब ये लोअर कास्ट पीपल अपर कास्ट पीपल के ट्रेडिशन एंड कल्चर्स में फॉलो करने लग जाते हैं तो दोनों कास्ट पीपल के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता कल्चरली, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस कास्ट रिजिडिटी रिड्यूसेस, ठीक है। देन अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, you must have been traveling in the metros in the urban area, in the buses in the urban area, right?
हैव यू एवर आस्क्ड एनीवन दैट व्हाट इज योर कास्ट? पूछने जाते हो? नहीं पूछते। रोड साइड ठेला लगा हुआ है छोला भटूरा का, पिज्जा का, डोसा का, क्या पूछते हो उसको पहले कि तुम कौन से जात का हो? उसके बाद वो सेटिस्फैक्ट्री आपको जवाब देगा तभी आप उससे खाना खाओगे। नहीं पूछते ना। तो ये अर्बनाइजेशन, ये मॉडर्नाइजेशन, इस सब के कारण जो है कास्ट रिजिड जो था पहले वो डाइल्यूट होता जा रहा है, फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। ठीक है, पहले लोअर कास्ट के लोगों का हाथ का खाना नहीं खा सकते थे, अब ऐसा चीज अर्बन एरिया सब में हो ही नहीं रहा, ये सब चीज सारा खत्म हो चुका है, राइट। देन द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, there were several social reformers like the Rajaram Mohan Rai, Ishwar Chand Vidyasagar, who had worked hard for the annihilation of the caste. B.R. Ambedkar gave through all his life had asked for the annihilation of the caste, right? So that is there. Then constitutional provisions, when India got independent and the constitutional forefather was making the constitution of India, then they had made it sure that there should not be any kind of discrimination which was going on since ancient times, that should continue further, and therefore the constitution was written in that manner. There has been some kind of assertive actions in the constitution also, and there has been removal of such exploitation. Article 23, Article 24, right? Right to freedom of religion is for everyone. Right to entry into temple is for everyone, right? Then there should not be any kind of discrimination on the basis of caste, religion, sex, place of birth. Untouchability has been removed through the Article 17. So these constitutional provisions has ensured that the caste identity should dilute. ठीक है? Then the dissociation of the caste and occupation. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फादर का जो ऑक्यूपेशन है वही चीज कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, कुम्हार का बेटा कुम्हार बन रहा है, लेकिन आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम डेवलप होने के कारण जो बच्चा पढ़ गया वो अब जरूरी नहीं है कि अपने फादर वाला ऑक्यूपेशन करे, अब वो जिस मेरिट का होगा, जो उसका टैलेंट होगा, जो उसका स्किल शॉट होगा, वो काम करता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो बीइंग डाइल्यूटेड। आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते होगे, क्या अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी से पूछते होगी तुम किस कास्ट के हो? नहीं पूछते ना। तो कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हो रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन से, राइट। देन द रिलीजियस कन्वर्शन इज ऑल्सो देयर। देखो कास्ट जो है ना वो रिजिड है इस एक पर्टिकुलर रिलीजन में, ठीक है, और हर एक रिलीजन में है ये कास्ट सिस्टम, राइट। तो जब रिलीजियस कन्वर्शन होता है, हिंदू से मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से हिंदू बन गए, हिंदू से बुद्धिस्ट बन गए, बुद्धिस्ट से हिंदू बन गए, तो वो बहुत बार जो है ना वो कास्ट ब्रेक कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी सिस्टम था। B.R. अम्बेडकर साहब ने खुद ही हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, और उनको देखते के बहुत सारे लोग हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिए थे। द क्रिश्चियन मिशनरी had converted several person of the lower caste people of the Hindu into the Christian, और यही लॉजिक देते थे कि कास्ट, अब तुम लोअर कास्ट के लोग हो तो तुमको राइट टू फ्रीडम ऑफ लिबर्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बोल बोल के उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया गया, राइट। सो रिलीजियस कन्वर्शन से भी डाइल्यूट होता है कास्ट आइडेंटिटी। देन एजुकेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट द right now we have the greatest this example. The president of India is Mrs. Draupadi Murmu, right, and she is from the ST community, right. We cannot have better example than this. So education से वो इतना ऊपर पहुंची है, ठीक है। आज के डेट में क्या उनसे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता, राइट। देन द जनरेशन चेंज, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होते जा रही हैं, नए नए जनरेशन हैं वो उतने ज्यादा सेंसिटिव टू कास्ट नहीं है, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्किल में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी का होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, दे आर फ्रेंड्स। और ये हमारे जनरेशन से ही आने लगा है, और हमारे नेक्स्ट जनरेशन से, उसके नेक्स्ट जनरेशन से तो और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा ये चीजें, है ना। तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा कास्ट आइडेंटिटी। Then government policies are also there like that, in which the government is
trying to eradicate this caste system. For example, if you take the Bihar government, then Bihar government pays 2.5 lakh to the couple who is choosing for the intercaste marriages, right? तो इस तरह के प्रोविजन से, इस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स सबके कारण भी कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट आइडेंटिटी जो है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने थे, that how the, what are the reasons for the flexible identity of the caste in India, right? Then how can you conclude? You can conclude by making a balance. देखो कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल है, कास्ट सिस्टम डाइल्यूट होता जा रहा है, बट दिस इज ऑल्सो द ट्रूथ दैट इट इज देयर। रूरल एरिया में अभी भी आप जाओगे तो इन द यूपी, इन द एमपी, इन द बिहार, यू विल फील दैट so much caste system is still preventing, ठीक है, worst form of the caste system, even untouchability is being practiced, right? So that is there. So the caste system is still persisting in India, that is a reality. However, the system is getting diluted slowly, that is also a truth. Therefore, there is need to sensitize people about the ill effect of the caste system, as well as there is need to rationalize reservation system. क्योंकि देखो रिजर्वेशन सिस्टम जब तक रहेगा ना, तब तक ये कास्ट वाली चीजें रहेंगी, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब तो ईडब्ल्यूएस सिस्टम भी आया है जिसमें इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे भी दिया जा रहा है, बट मोस्टली दिस एससी एसटी कम्युनिटी, दिस ओबीसी कम्युनिटी, ये सब कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन है। जब तक रिजर्वेशन चलता रहेगा तब तक ये कास्ट सिस्टम तो चलता ही रहेगा। तो रिजर्वेशन सिस्टम को भी रेशनलाइज करने की जरूरत है, ताकि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो अभी तक अपलिफ्ट नहीं हो पाए हैं, उनका अपलिफ्टमेंट हो जाए फास्टर, सो दैट देन रिजर्वेशन सिस्टम कैन बी रोल्ड बैक। तभी तो आप कास्ट आइडेंटिटी को खत्म कर पाओगे, राइट? सो यू कैन कंक्लूड इन दिस लाइन्स। Then question number 20, please read it. Question number 20 says, अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं समझोगे ढंग से तो फिर कुछ भी आंसर लिख के आओगे, राइट? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन द इथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। सबसे ज्यादा जो इसमें टफ पार्ट है वो इसके कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बनेंगे वो समझने हैं, ठीक है? सबसे पहले तो समझो कि दैट इथनिक आइडेंटिटी जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, देन देयर आर हायर चांसेस ऑफ कम्युनलिज्म, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम। जब बहुत ज्यादा लोग इथनिक आइडेंटिटी को पकड़ के रखेंगे तो फिर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से हेट करने लग जाता है, और उस हेट के चक्कर में फिर कम्युनल वायलेंसेस, कम्युनलिज्म वगैरह होता है, राइट? तो यहाँ पे जो पार्ट्स बन रहा है, और ये व्हाट डज दिस पोस्ट लिबरल इकोनॉमी मींस लिबरलाइजेशन के बाद का जो, जैसे लिबरल वी आवर कंट्री बिकम लिबरल इन नेचर, अर्लियर इट वाज क्लोज्ड इकोनॉमी, बट लेटर वी हैव opened our economy, we became more liberal in nature, right? So this is post liberal economy, ठीक है? तो पोस्ट लिबरल इकोनॉमी मींस 1990s के बाद जब हम लोग ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया, देन वी हैड चेंज्ड आवर इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? सो आफ्टर दैट क्या हो रहा है, उसका इंपैक्ट इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म पे क्या हो रहा है, ये आपको लिखना है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें दोनों पार्ट्स बनेंगे? फर्स्ट पार्ट विल बी द पॉजिटिव इम्पैक्ट of the post-liberal economy on the ethnic identity and communalism, and second part there will be negative impact also, मीन्स एक टाइम पे कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है दैट पोस्ट लिबरल इकोनॉमी के कारण
कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो इथनिक आइडेंटिटी को कमजोर कर रही हैं, जिसके कारण कम्युनलिज्म होने का चांसेस कम हो रहा है। लेकिन नोइंगली और अननोइंगली देयर मे बी सिनेरियो इन विच इन द पोस्ट लिबरल इकोनॉमी कुछ सेक्शंस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है और उसके अंदर इथनिक आइडेंटिटी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, और वहां पे कुछ सर्टेन एरिया में कम्युनलिज्म के चांसेस बहुत हाई हो रहे हैं, राइट। सो यू विल हैव टू राइट बोथ द पार्ट्स, और ये चीज समझना जरूरी था यहाँ पे, ठीक है, तभी आप बेटर आंसर लिख पाओगे। एंड देन यू हैव टू राइट सम वे फॉरवर्ड आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म को अपने वर्ड्स में डिफाइन करोगे। जब आप अपने वर्ड्स में डिफाइन करोगे तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, इसीलिए इतना ज्यादा वर्ड्स यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। ओवरऑल आपको इंट्रोडक्शन जो लिखना है इन 15 मार्कर, यू हैव टू राइट इन द 25 to 30 वर्ड्स ओनली, इतना ही टाइम होगा और इतना ही स्पेस आपके पास अलाउड होगा, राइट। So the ethnic identity is a personal self-categorizing concept in which an individual identifies with an ethnic group and its cultural identity, beliefs, values and origins, whereas communalism is a strong sense of loyalty to the interest of the one particular group rather than to society as a whole, which can lead to extreme behavior or violence towards others. So this is the standard definition of the ethnic identity and the communalism. You can also define in your own words. Then the post-liberal economy is marked by the economic reform after 1990s. There is a huge impact on the post-liberal economy on the ethnic identity and communalism. And what has been that impact, positive impact as well as the negative impact, that we will be looking forward in the main body. Okay. So what has been the positive impact of post-liberal economy on the ethnic identity, which reduces the chances of communalism? क्योंकि ethnic identity जब कम होगा तो communalism के chances काफी कम हो जाएंगे। यही ethnic identity जब high हो जाता है तो politicians फिर use करते हैं, जो ill-minded politician who is using the unemployed youth for the communal violence, right? So that is there. What are the positive impact on this? पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में ऑब्वियसली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, बहुत ज्यादा कंपनीज वगैरह इंडिया के अंदर आए, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो गया, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, इस सब के कारण जो है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा हुआ। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो क्या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। एम्प्लॉयमेंट है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास मेरिट है, जिसके पास वो वर्कफोर्स में जो भी लोग हैं उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये इतनी हर एक कंपनी के अंदर हर एक कैटेगरी के लोग काम करने लगे, राइट। तो ये इथनिक आइडेंटिटी जो उनके पास कंटेंट था वो चीज डाइल्यूट होने लगा, राइट। देन द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हमेशा से क्या चलता हुआ रहा है इतनी चीजें कि कुछ कम्युनिटी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कुछ कम्युनिटी जो है वो वीकर होते हैं। बट जब हर एक कम्युनिटी का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है तो ये इतनी चीजें खत्म होने लगेंगी, राइट। तो ये इतनी चीजें जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से खत्म होने लगी। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द वर्कफोर्स, the workforce got diversified because in a post liberal economy, within a company, within a factory, there were diverse range of work which was required, ठीक है। सबको मिलके एक साथ एकजुट होके एक काम करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक वन कार कंपनी, कोई भी कार कंपनी का नाम ले लो, अब वहां पे हर एक तरह का काम है, वहां वेल्डिंग का भी काम है, वहां स्टील का भी काम है, वहां ग्लास का भी काम है, ठीक है, वहां पे फैब्रिक का भी काम है, सबका काम है। तो वो उस कंपनी में हर एक तरह के लोग होंगे, ठीक है। तो वो इथनिक आइडेंटिटी सबसे ये जो है डाइल्यूट होता जाएगा। देन मैकडोनलाइजेशन एंड द वॉलमार्टाइजेशन, ये क्या है? ये है कि जैसे वॉलमार्ट, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये पूरे वर्ल्ड में इनका चेन खुलता जा रहा है। मैकडोनल्ड्स आपने देखा होगा, गोल्डनिंग, पूरे वर्ल्ड में इनका ये खुलता जा रहा है। तो जब मैकडोनलाइजेशन और वॉलमार्टाइजेशन हो रहा है उस टाइम पे हो क्या रही है, दैट
देयर इज होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन भी सब लोग का एक तरह का खाना खाना, सब लोग का एक तरह का जो है कपड़ा पहनना, सो होमोजेनाइजेशन इज हैपनिंग, राइट। और होमोजेनाइजेशन होगा तो इथनिक आइडेंटिटी कम होगी, जब डिफरेंशिएशन होगा, डाइवर्सिटी होगी, तब इथनिक आइडेंटिटी बहुत हाई होगा, बट होमोजेनाइजेशन जब होगा तो इथनिक आइडेंटिटी कम होगा, राइट। सो दैट इज हैपनिंग थ्रू द मेट्रोनाइजेशन एंड द वालमार्टाइजेशन। Urbanization and modernization, just now we had discussed in the other question also कि अर्बन एरिया और अर्बन एरिया में मॉडर्न चीजें बहुत ज्यादा आती जा रही हैं, तो ये इथनिक आइडेंटिटी सब बहुत ज्यादा मींस रिजिड नहीं रह रहा है, ठीक है। every type of in a urban area every type of person is walking on the roads, walking on the footpath, they are using one same parks, they are going to the clubs, right? No one is asking you are from which community and which ethnic background, right? So that is there. Then language shift has been there. देखो ethnic identity कब protected होगा बहुत ज्यादा, जब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग एक साथ रहे, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई डोगो बोल रहा है, कोई बोडो बोल रहा है, कोई डोंगरी बोल रही है, कोई नेपाली बोल रहा है, तो ये लोग क्या होगा कि जब अपना अपना लैंग्वेज ही बोलते रह जाएंगे तो एथनिक आइडेंटिटी बहुत हाई होगा कि ये नेपालीज हैं, ये मैथिली लोग हैं, ये मराठी लोग हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा हाई होगा। लेकिन लैंग्वेज शिफ्ट हो गया पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ तो ये डिमांड हो गया कि मैक्सिमम जो जॉब्स में डिमांड हो गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश आना चाहिए, राइट। सो एवरीवन स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश and because of this there has been homogenization in the language also. So the person now in a company, if and everyone is speaking English only, how would you know that which person is from which community, from which part of the country? You would not know. But if that person in a company, if that person would have been speaking Marathi, someone must have been speaking Telugu, Tamil, then you would know that okay, this is from this ethnic identity, राइट। तो ये लैंग्वेज शिफ्ट होने से ये हुआ कि इथनिक आइडेंटिटी भी जो है वो डाइल्यूट होती गई, राइट। देन द सोशल मीडिया एंड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, एवरीवन कैन मेक देयर सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, और वहां पे ऑब्वियसली सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी अकाउंट हो, वहां पे कास्ट नहीं पूछा जाता, कम्युनिटी नहीं पूछा जाता, रिलीजन बस पूछते हैं, दैट टू यू हैव द whether you want to give it or not give it, that is your choice, right? So that is there. social media and global influence भी होता है, इससे भी ethnic identity जो है वो पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप किस कम्युनिटी को, आप किस कम्युनिटी को, राइट। सो ethnic identity जो है वो कम होते जा रहे हैं। देन द इंटर मैरिजेस एंड सोशल इंटीग्रेशन, अब तो इंटरकास्ट मैरिज छोड़ो, इंटर कॉन्टिनेंट मैरिज होता है, ठीक है, इंडियंस मैरिंग अमेरिकन, अमेरिकन मैरिंग जापानीज, जापानीज मैरिंग यूरोपियंस, राइट। सो दैट इज हैपनिंग। सो अब तो मीन्स पता नहीं रहेगा ना फिर कि इथनिक आइडेंटिटी क्या है किसका, ठीक है। एक जनरेशन तक तो फिर भी चलेगा कि जो जनरेशन मैरिज किया है उसका बेटा, सबको तो पता ही नहीं होगा कि कौन सी इथनिक आइडेंटिटी का है, क्या है, नहीं है, राइट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स which this post liberal economy has brought, there has been positive impact, means the ethnic identity is reduced, or when ethnic identity is reducing तो there will be less chance of communalism, ठीक है। इथनिक आइडेंटिटी से ही कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन द ethnic identity, which reduces the chance of, which increases the chance of communalism. तो ये क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज देयर, ठीक है।
In the post-liberal economy, there may be scenario that some part of the country is getting developed very fast, other part of the country is getting means it remains backward, it remains isolated. ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है। और जब कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगा तो जो कम्युनिटी के साथ होगा, जो इथनिक आइडेंटिटी वाले लोग के साथ, जो इथनिक कम्युनिटी के साथ होगा, उनको लगेगा दे आर नेग्लेक्टेड, दैट इथनिक कम्युनिटी विल बी स्ट्रेंथेंड फर्दर। ये नेक्सलिज्म, ठीक है, माओइज्म, माइस्ट अटैक, नेक्सल अटैक, इस सब का कारण क्या है? क्योंकि कोई सर्टेन सेक्शन जो है वो अंडर डेवलप्ड रह गए, उनको नेग्लेक्ट रह गए, वो आइसोलेटेड रह गए और उस एनर्जी को टैप कर लिया नेक्सलाइट्स लोगों ने, उस एनर्जी को माइस्ट लोगों ने टैप कर लिया और फिर उनको वायलेंस के ऊपर धकेल दिया, राइट? So such energy can be there, such if economic disparity happens because of the neoliberal economy, तो उस केस में इथनिक आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हो सकता है अगर कोई सर्टेन कम्युनिटी को छोड़ दिया जाता है तो, राइट? देन द पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन इज देयर। देखो पॉलिटिकल पार्टी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, जो इथनिक पॉलिटिक्स करती है, रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी, दोज पॉलिटिकल पार्टी वुड नेवर एवर लेट the person to lose their ethnic identity, because identity based वोट ही मिलता है उनको, राइट? सो ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन भी के कारण भी जो है, और ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है पोस्ट लिबरलाइजेशन टाइम, 1990s के टाइम पे कोलिशन गवर्नमेंट, इस सब चीजें का फॉर्मेशन, ऑल दिस थिंग्स इज हैपनिंग। कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज भी इमर्ज होके आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर डूइंग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स, right? So that is there. Then the marginalization of the minority in the post liberal economy, there are chances that the minority sections has been left alone, they have been isolated. So minority sections in a country tends to be more like marginalized in nature, means they are more vulnerable in nature, right? So there may be a scenario that their vulnerability increases because of this. Then more reservation has been provided after 1990s. OBC reservation has been provided recently. This economically weaker section has reservation has been provided. ठीक है, तो jobs तो increase हुए हैं post liberal economy में, government jobs, but रिजर्वेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। और रिजर्वेशन इंक्रीज होगा तो जो कम्युनिटी को फायदा उठेगा रिजर्वेशन से, वो कम्युनिटी कभी भी रिजर्वेशन नहीं छोड़ना चाहेगी जब तक उसका फायदा उठे रहे। बहुत सारे कम्युनिटी तो मींस लड़ाई झगड़ा करती है टू गेट इनटू द रिजर्वेशन सिस्टम। मणिपुर वायलेंस जस्ट नाउ, मैथिस वांट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन कैटेगरी, राइट? सो दैट इज हैपनिंग। Then economic competition can happen, and in that economic competition in the post liberal economy, one community may lag behind the other community. तो जो lacking behind है वो उनका ethnic, there may be scenario that they are from the one particular community, तो उनका ethnic identity और ज्यादा strengthen हो जाएगा, ठीक है? Then the misuse of social media can also be there. There is no need to explain this. ग्लोबलाइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन इज हैपनिंग पोस्ट लिबरल इकोनॉमी में। सब जगह पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो गया तो पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट भी कनेक्ट हो गए, पूरे वर्ल्ड में रेडिकल फोर्सेस भी कनेक्ट हो गए। आईसिस का रिक्रूटमेंट इंडिया से होने लगा, few of the recruitment has been taken place, right? So such things are there, right? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पोस्ट लिबरल इकोनॉमी हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑल्सो, ठीक है? Then what can you write in the conclusion? You can conclude in lines that though both positive and negative impact can be seen in the ethnic identity due to post-liberal economy, however, there has been more positives as it has brought prosperity in the society. Because of this, ethnic identity has been diluted. This makes it difficult for ill-minded people to have communal violence in the society. जितना ज्यादा इथनिक आइडेंटिटी कम होगा उतना ज्यादा कम्युनलिज्म के चांसेस कम होंगे। एंड यू कैन ऑल्सो राइट ए वे फॉरवर्ड इन दिस क्वेश्चन दैट व्हाट यू शुड डू
so that the more more economic should be boosted, inclusive development should be there, sustainable development should be there, ठीक है, financial inclusion should be there. So what should be such way forwards can also be written in this question. ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी वाला जो पार्ट्स था वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं. One question I had discussed in the trend analysis of the Indian society part, वो urbanization वाला question. So if you have not seen that video, please go and watch that video. One question has been covered there, and rest of the question, 5 questions has been covered in this session. So now we will be taking the governance part. ठीक है, next question will be from the governance part of the GS paper 2. Please read this question. So the question says, the crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to the human resource development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. Means जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, inadequate attention has been paid to the human resource development in India. Suggest measures to address this. How many parts are there? Obviously there are 2 parts. In the first part you will have to answer that how this human development process has paid inadequate attention to the human resource development. Then in the second part you have to write, suggest the measures that can address this inadequacy. Right. So these are the 2 parts you should be writing. In the introduction you can write, और इस वाले इंट्रोडक्शन में देखो यहाँ पर आप कुछ डाटा फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड बहुत अच्छे डाटा आपने कलेक्ट किए होंगे फॉर राइटिंग योर मेंस. सो प्लीज यूज दैट डाटा. राइट, एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इन 2022 India has the labor force of around 53 crores. Right, 53 crores labor force है इंडिया के अंदर. But the Human Development Report 2020 says only 1 in the 5 Indians in the labor force is skilled. तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स रहने से ही नहीं होगा, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. Though you have 53 crore labor force, but out of that only 10 to 12 crore labor force are skilled in nature. So what can you do with that? Can you utilize your demographic dividend properly? Obviously not. ठीक है. So this shows that there has been inadequate attention paid to the human resource development in India, which need to change. Obviously, because you have to change this scenario, you have to develop human resource, right? So that is there. Then inadequate attention paid to the human resource development. What would you write in this? लो एजुकेशन स्पेंडिंग. इससे तो पता चलेगा ना कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप कराना चाहते हो, कितना कराना चाहते हो. सो राइट नाउ इफ यू सी दैट the educational spending of government, then it is near about 2.7% of the GDP. But the national education policy says that it should be approx 6%. Right? So obviously India is putting less money, less expenditure it is having on the education sector than it is recommended. That means
you are not trying to achieve that much level of the human resource which can be achieved by gaining 6% of the this. ठीक है, तो ये चीजें हैं. Then unemployable human resource. Just now we had seen that near about 1/5 is unskilled. Only 1/5 is skilled and 4/5 is not skilled. Right? तो जो skilled नहीं है, they are not employable in nature. ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट कंपनी वाले मैनेजर्स हैं who are not capable or not industry fit. Their skill sets are not industry fit and therefore they cannot be employed. Right? So that is there. जैसे according to the National Employment Report 2020 only 45.9% of the Indian engineering graduates are employable. बाकी के 55% they are not employable. इंजीनियरिंग बस उन्होंने कर ली डाम के लिए. ठीक है, तो ये सिनेरियो है यहाँ पे. Then we have low investment in research and development. If you see the investment of India in the field of research and development, then it is near about 0.7%. But the global average is around 1.8%. ठीक है, that means you are not putting enough money in the research and development. और research and development में enough money नहीं put करोगे तो फिर better human resource कैसे आप utilize कर सकते हो, कैसे आप create कर सकते हो, right? Then there are limited investment in the employee training, not only in the public sector but also in the private sector. There are limited training facility, limited investment for the employee training is there. For example, the NASSCOM survey had conducted in 2020 and it has said that only 25% of the Indian IT companies invest in upskilling their workforces. तो ये तो प्राइवेट सेक्टर की ऐसी बात है. प्राइवेट सेक्टर में भी only 25% IT companies is investing for the upskilling their this employees. Right? अब तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया ना, अपग्रेड आ गया, then skill share वगैरह आ गया. Right? So many platform has come up, but still people are not getting enough skill set. और उससे फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है. ठीक है, देन जेंडर डिस्पैरिटी इज देयर. राइट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसे तो मेल का भी कमी हो रहा है, बट फीमेल सेक्शन तो वैसे भी नेग्लेक्टेड है. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यू आर नेग्लेक्टिंग. राइट, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लो, प्लस the skill set a female is having, that is also low. Right? So there is gender disparity in the human resource development. ठीक है, तो इनफ इसको इनफ फोकस इसमें नहीं किया जा रहा है. राइट, सो इफ यू सी द डाटा, देन according to the World Economic Forum Global Gender Gap Report 2023 says that India's rank is 127 out of 146 country only. So this is the scenario. How much human resource can you expect? ठीक है, and of what kind? Right? Then the lack of academic industry linkages is there. ठीक है, because the human resource which you are creating, they are creating for the industries, but because of the lack of linkages between the educational sector and means academic sector and the industry sector, वो फिर पता ही नहीं चलता कि इंडस्ट्री की जरूरत क्या है, कंपनीज की जरूरत क्या है. एजुकेशन वाले अपना मनमर्जी पढ़ाते हैं और कंपनीज को जो जरूरत है वो पढ़ाने देते. फिर कंपनीज के अंदर जब एम्प्लॉयमेंट को लिया जाता है तो उनका प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, एम्प्लॉयबल बनाया जाता है, उनको जो जरूरत है वो काम कर पाए एटलीस्ट. राइट, सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ इंडिया. ठीक है,
Then what are the measures for the human resource development in India? What measures has been taken? पूछा है ना आपका, suggest measures. So what measures can be taken that you should write? These are the measures. Increased education spending. 6% तो एजुकेशन में स्पेंडिंग चाहिए ही चाहिए, राइट क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली ये बात लिखा हुआ है, राइट सो देयर शुड बी increased education spending. Skill development should be then done. National Skill Development Council is there, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is there, right? So several government schemes are there, but उसको speed up करने की जरूरत है, उसको fasten up करने की जरूरत है, और जिसको भी skill मिले उसको it should be made sure that they are getting employment also. Do not just give them skills and leave them so that they are not getting any employment. There should be 100% placement from the skill center, right? So that should be there. Then better healthcare service should be there, because जब better healthcare service provide किया जाएगा तो फिर employer जो गवर्नमेंट के जो भी हैं ह्यूमन रिसोर्स वो बीमार कम पड़ेंगे, और जब बीमार कम पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, efficiently they will be developed. So better healthcare service will provide you have good quality of human resource who can do their work efficiently, right? Then gender equality should be provided, and by gender equality it is clear that half of the population is female, so उस female को भी आप skill set provide करो, उनको भी promote करो to work, to contribute in the economy, ठीक है? So such things should be there. Then teacher training and quality should also be enhanced. बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ सब पे टीचर ट्रेनिंग ही सही से नहीं हो पाती, टीचर्स को ही नहीं पता है कि किस तरह से स्किल सेट प्रोवाइड करनी है. सो हाउ दे कैन डू, ठीक है? जो गवर्नमेंट स्कूल्स की वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है? सो देयर शुड बी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है? देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, इसका यूज करो, जैसे दीक्षा ऐप है फॉर द टीचर्स फॉर देयर ट्रेनिंग, ठीक है? सो such things can be provided, such things should be done so that the human resource development can be ensured in the country. तो ये सारे points आपको लिखने थे in this question. How can you conclude this? You can conclude by writing that India is enjoying the demographic dividend in which the median age of India is as present 29 years only. तो ये सोचो कि कितना ज्यादा मीडियन कम मीडियम एज है, और वी आर एक्सपेक्टेड दैट वी विल बी यूटिलाइजिंग दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड टिल 2055-56. अगर ये 30 साल निकल गया हमारे हाथ से, so we will not be able to do anything. This is the right time to have a better human resource. This is the right time to skill your human resource, right? So that is should be ensured. Therefore, to utilize this demographic dividend, India need to work for producing quality human resource. This will help me in achieving India's dream to reaching a 10 trillion economy. और 10 trillion economy का आपको पता ही है कि टारगेट है 2030 तक, हमारा टारगेट है, इंडिया का टारगेट है बाय 2047 वी शुड बी डेवलप्ड कंट्री. तो कैसे करोगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ही नहीं होगा, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं रहेगा, स्किल मैनुअल स्किल लेबर्स ही नहीं रहेंगे, फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ही नहीं होगा, तो हाउ इट इज पॉसिबल, राइट? सो दैट इज देयर. देन क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज, प्लीज रीड इट वंस, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है.
E-governance as a critical tool of governance has assured in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacy hampers the enhancement of these features? तो सबसे फर्स्ट पार्ट तो ये बन रहा है, means how this e-governance is a critical tool of governance and how it has assured in effectiveness, transparency and accountability in the government. Second is what are inadequacies, how this e-governance is, how any kind of inadequacy hampers the e-governance, that you have to write, and obviously then it is a 10 marker question only, so you will not have a space to write the way forward. So in conclusion only you will write a solution oriented conclusion. ठीक है, so this you should be doing. In the introduction you can write about the e-governance, right? So e-governance is the application of the information technology and communication for the purpose of the governance. Central and state government has adopted various technology and started programs for e-governance like the Digital India Mission, National Governance Plan, Mobile Application, TV Channel. इस सब से क्या हो रहा है कि accountability, transparency and effectiveness बढ़ रही है, right? Then in the body you have to write how this e-governance has assured the effective, other जितने भी keywords है ना, effectiveness, transparency, accountability, so separately you will have to write how e-governance is assuring effectiveness, how it is assuring transparency, how it is assuring accountability. ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो दो पॉइंट भी लिखोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? सो इट हैज इंप्रूव्ड द सर्विसेज. इफेक्टिवनेस में आप लिख सकते हो जैसे आयुष्मान भारत स्कीम. आयुष्मान भारत स्कीम हैज नाउ बिकम द आयुष्मान डिजिटल आयुष्मान भारत स्कीम, राइट? ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, this ensures that even in the remotest village if internet connection is there तो वहां पे digitally telemedicine और tele health facility can be provided. ठीक है, e health facility can be provided. ठीक है, then automates and streamline the process. e governance का यही फायदा है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, whole world is connected to the internet. So at from any point you can see what is happening, right? So it automates and streamline the process. जैसे आज के डेट में देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द मोटर व्हीकल लाइसेंस एंड फॉर द पासपोर्ट सिस्टम, सबका से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो गया. देन हाउ ई गवर्नेंस हैज असर्ट द ट्रांसपेरेंसी. कैसे होता है? इट मेक्स द सिस्टम ट्रांसपेरेंट, कि बहुत सारे सिस्टम जो है उसमें आप डायरेक्टली देख सकते हो कि किस लेवल तक क्या पहुंचा है. यू हैव अप्लाइड फॉर समथिंग, सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल, if you are doing a speed post now, you get one tracking ID, and through that tracking ID you can track your package, means it where it has reached, right? तो स्पीड पोस्ट जो है वो इंडिया गवर्नमेंट का है, तो वहां पे ई गवर्नेंस आया कि नहीं आया, राइट? सो दैट इज देयर. देन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी कैन बी देयर थ्रू द ऑनलाइन only by filling RTI, right to information. You can get any kind of information which you want if that information is not under the Official Secret Act, right? So that is there. Then e-governance assert accountability. How this is assert? जैसे it holds the government official accountable. ठीक है, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स है
तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन हो गया, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन, किसी कोई लैंड अगर डिजिटाइज नहीं हुआ है तो वहां पे आप गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हो कि क्यों नहीं हो रहा है, सबका लैंड दिखा रहा है, आपका लैंड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और ये ऑनलाइन सिस्टम से ई गवर्नेंस होने से क्लियर कट डाटा अवेलेबल हो जाता है कि किस मिनिस्ट्री ने कितना काम किया, किस डिपार्टमेंट में कितना काम किया, किसको कितना फंड एलोकेट था, किसने कितना एक्सपेंडिचर किया, किस टाइम पे किया, how efficiently it has been done. All these things are audited by the CAG. It is put in the parliament, right? So accountability of the executives, the accountability of the governments can be ensured through the e-governance, right? Then there can be online grievance redressal, like the CP gram is there, centralized public grievance redressal and monitoring system. तो यहाँ से आप कोई भी grievance डाल सकते हो regarding any if any public officials is not performing their duty, so grievance redressal हो सकता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सोशल ऑडिट हो सकता है गवर्नेंस के थ्रू, सिटीजन चार्टर ऑनलाइन आ सकता है, राइट। सो सच थिंग्स इज हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाई इट हैज बीन पॉसिबल थ्रू द ई गवर्नेंस इटसेल्फ। बट what are those things which if not present e-governance cannot be implemented properly? वो क्या चीजें हैं? So these are like low digital literacy. अगर लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, डिजिटली इलिटरेट है, तो हाउ दे विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिटन ऑन द कंप्यूटर, व्हाट इज रिटन ऑन द मोबाइल, राइट, हाउ टू एक्सेस दैट डिजिटली। आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, तभी तो आप कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे वहां से, कोई इंटरनेट आपको चलाने आना चाहिए, राइट, कोई वेबसाइट खोलने आना चाहिए, वहां पे खोजने आना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड बी नोइंग। सो digital literacy is there according to Indian inequality report 2022 by the Oxfam. Only 38% of the households in the country are digitally literate. अब सोचो ई गवर्नेंस क्या करोगे लाके, अगर आपका डिजिटल लिटरेसी इतना कम है, कितने कम लोगों को आप बेनिफिट दिला सकते हो, राइट। देन डिजिटल डिवाइड इज देयर। डिजिटल डिवाइड मीन्स रूरल अर्बन एरिया में ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं, रूरल एरिया में कम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, अर्बन एरिया में ज्यादा स्मार्टफोन्स यूज होता है, रूरल एरिया में कम होता है, लैपटॉप्स का यूज ज्यादा होता है अर्बन एरिया में। तो दीज आर डिजिटल डिवाइड्स। लाइक only 31% of the rural population are using internet as compared to the 67% of the urban area. So this digital divide is there. ये digital divide जितना बड़ा होगा उतने कम लोग इंटरनेट यूज करेंगे और फिर उतना जो ई गवर्नेंस वाली चीजें हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो सर्विस लोगों के पास कम पहुंचेगा, राइट। सो दैट इज देयर। Then infrastructure challenges. You do not have digital infrastructure, you do not have internet connectivity, you do not have electricity connections, right? So such things are there. भारत नेट प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो फिर ई गवर्नेंस देखिएगा क्या करोगे, कौन एक्सेस करेगा वो, राइट। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इज देयर इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड में 22 लैंग्वेजेस हैं, एंड इफ यू सी देन वी आर स्पीकिंग मोर देन 2000 लैंग्वेजेस इन द कंट्री, ठीक है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आता, जिसको हिंदी नहीं आता, तो उनके लिए फिर बहुत लिमिटेड वेबसाइट्स होते हैं which they can access, right? So language diversity problem is also there in the country, because of which e-governance is not properly done. Then cyber security risk is also there. जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है, that everything is at the risk in the cyber security thing, right? So that is there. लोग जैसे आप देखोगे तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक वाज 7th, राइट, सॉरी 10th, इट वाज
and only 20, and if you see, then 20% of the all data stolen and exposed globally belong to Indians only. So cyber security threat is also there. बहुत सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब भी किस पे, ई गवर्नेंस अगर यहाँ पे कर रहे हो तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, राइट. सो दैट इज देयर. देन रेसिस्टेंस टू चेंज, ट्रेडिशनल प्रोसेस एंड पेपर बेस्ड वर्कफ्लो. देखो पूरा बैंकिंग सिस्टम, बैंक को जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट स्टिल सो मेनी थिंग्स इन द बैंक इज स्टिल हैपनिंग थ्रू द पेपर वर्क. फॉर्म अभी भी आपको फिल करना ही पड़ रहा है, राइट. सो दैट इज देयर, ठीक है. और बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं जो पेपर वर्क पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है. सो एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा. इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी तो है, एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग हियर, बट देयर इज नो वन टू अपडेट. जैसे साइबर सिक्योरिटी की आप बात करोगे तो एवरी डे न्यू काइंड्स ऑफ मालवेयर इज कमिंग ऑन, राइट. सो देयर इज थ्रेट, डेली रिसर्च हो रहा है, और उतना फास्ट पेस पे गवर्नमेंट अपडेट नहीं होती है, राइट. So because of this, the e-governance part of the government is lacking behind. ठीक है. So that is there. Then how can you conclude this? You can conclude by writing that in the internet era, e-governance is a boon for the door-to-door service delivery in any part of the country. However, there are some challenges which need to be tackled. Government should implement the BharatNet project properly and also take effective measures to eliminate the digital divide and provide digital literacy. क्योंकि बिना डिजिटल डिवाइड को हटाए, बिना डिजिटल लिटरेसी को प्रोवाइड किए, देयर कैन नॉट बी ई गवर्नेंस, राइट. तो ये सारे इश्यूज हैं, चलता हुआ आ रहा है. सो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 14 नाउ. The question number 14 reads that discuss the contribution of civil society groups for the women's effective and meaningful participation and the representation in the state legislature in India. अब देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो हाउ मेनी पार्ट्स यू आर मेकिंग.